वेलकम टू माय बायो क्लासेस। आज हम लोग आए हैं क्लास 12 का बायो लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट जो क्लास था उसमें आप लोग का जो शुरू में हम लोग डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या लॉस था वो भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद कहाँ कहाँ पर आपका मेंडल्स का जो लॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो टैली नहीं कर रहे थे वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस पर पढ़े हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ चुके हैं। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो हम लोग का जो कुछ ट्रिक्स हाउ टू फाइंड आउट the ratio, genotypic and the phenotypic ratio of monohybrid cross, dihybrid cross and trihybrid cross without making the checkerboard Punnett square, that also we have already learned it. Okay? Before starting the class, आप लोगों को एक बात बोलने, क्लास 12 जो अभी आप लोग का पढ़ रहे हो, जो स्टूडेंट्स हु आर नाउ रीडिंग इन द क्लास 12, तो आप लोग पहले नीट तो ठीक है, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नीट एग्जाम, बट उसके पहले आपका सामने मेन टारगेट होना चाहिए क्लास 12 का एग्जाम। ठीक है, अगर क्लास 12 में आपका अच्छा रिजल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली नेट में भी आप क्रैक कर सकते हो, या उसके बाद आपको नेक्स्ट अगर बाई चांस अगर किसी तरह से नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी यू कैन ट्राई फॉर इट ऑल्सो। ठीक है, बट फर्स्ट टारगेट विल बी योर द क्लास 12 रिजल्ट। ओके, तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरा चीज है, जो लोग अगर नीट में एक बार भी क्रैक नहीं कर सकते हो तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें बिल्कुल मतलब जो होता है ना, डिसहार्टेन नहीं होना है जो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि नीट के बिना भी लाइफ में और भी बहुत सारा चीजेस करियर आप लोग कर सकते हो, तो दैट इज नॉट द अल्टीमेट। वेल यू कैन डू इट, अगर नहीं हुआ तो दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक। ठीक है, हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है जो टेस्ट क्रॉस, एक बैक क्रॉस और एक रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, आई विल स्टार्ट विथ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है? इन द A1 जनरेशन हम लोग क्या देखे थे, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब ये में हुआ था, जब क्रॉस कर रहे थे हम लोग पेरेंटल जनरेशन में एक डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ एक रिसेसिव होमोजाइगस का क्रॉस किए थे, तो A1 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला था? हेटेरोजाइगस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग A2 में भी हम लोग देखे थे जो क्या क्या उसमें हम लोग फिर सेल्फ क्रॉस कराए थे, तो हम लोग का क्या रेशियो मिला था, क्या हुआ था। ओके, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? दैट heterozygous, what is a maybe heterozygous, maybe homozygous, whatever it, that is a crossed with the pure recessive organism, that is called the test cross. Okay, क्यों हम लोग इसको करते हैं? सपोज अगर आपको दिया गया जो टेस्ट क्रॉस का जो चीज आपको बोला गया, उसमें आपका कुछ पोर्शन जो है आप इट इज नॉट नोन टू यू, देन वी विल डू टू फाइंड आउट द जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट अननोन ऑर्गेनिज्म, टू वी डू द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगर हम बोलेंगे तो उसमें आपको और ये होगा। नेक्स्ट, और भी हम लोग क्यों करते हैं इसको? इसीलिए टू फाइंड द इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सपोज टेस्ट क्रॉस में हम लोग का पेरेंटल क्या लिए? कैपिटल टी, कैपिटल टी। नाउ इट इज क्रॉस्ड विद द स्मॉल टी, प्योर homozygous tall crossed with pure homozygous short. So, okay, recessive. Now, in F1 generation, what we get, that is the capital T, small t. So, okay,
तो इन टेस्ट क्रॉस दैट वी का मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर सोचो हम लोग का दिया नहीं है कुछ भी, उसके साथ हमको जो भी मत होगा उसके साथ ये जो रिसेस है होमोजाइगस उसको क्रॉस कराना है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या हो सकता है, एक ये कंडीशन हो सकता है, इसके साथ स्मॉल टी, एक ये कंडीशन हो सकता है, और एक ये कंडीशन हो सकता है। ओके ओके, तो हम लोग इसमें देखते फिर इस क्रॉस करके हम लोग को इसमें क्या उसमें मिलेगा और कैसे हम लोगों का जो अननोन ऑर्गेनिज्म जो हम बॉक्स बनाए हैं ना, तो समझ लीजिएगा ये हम लोग का मतलब अननोन हो सकता है या नोन भी हो सकता है। तो उसमें हमको रेशियो से कैसे हम लोग को मालूम होगा जो ये क्या है, कौन सा डोमिनेंट है प्योर डोमिनेंट, कौन सा आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और कौन सा आपका होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, क्या क्या इसमें गैमेट हो सकता है, ये गैमेट और ये गैमेट, इसमें क्या हो सकता है ये गैमेट ये गैमेट। चेकरबोर्ड, if you do the checkerboard Punnett square, so what we get here is a capital T, इसमें small t, तो इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी। What happened here? That we get here the dominant character. Okay? डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब हमको चार जो मिला है, चारों में चारों हमको डोमिनेंट मिला, तो हम लोग रेशियो क्या लिख सकता है 4:0, नो रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, ये हम लोग का एक हुआ। नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसका एक ये गैमेट, इसका एक ये गैमेट, इसका ये गैमेट और ये गैमेट, ठीक है। इसमें अगर चेकरबोर्ड हम लोग बनाते हैं तो चेकरबोर्ड में हम लोग को क्या मिलेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रखते हैं, स्मॉल टी इधर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या देखिए इसमें 2 heterozygous tall and 2 pure dwarf, 2:2, इसको हम लोग 1:1 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ये इसमें क्या गैमेट मिलेगा, एक स्मॉल टी और एक इधर भी स्मॉल टी, ठीक है। सो वी विल डू द चेकरबोर्ड हियर, and one gamete we write here, another gamete we write here, and what we get is the small t and the small t. What we get here? Homozygous pure recessive. What will be the ratio then? 0:4. No dominant character. So, okay. Now, from this test cross, suppose our question has given this portion is blank, nothing is written over here, and that's suppose a blank and the cross with the small t, and the ratio is given here 4:0, then obviously you can write without any hesitation that is this portion, this unknown organism's genotypic configuration will be, that is the homozygous dominant, pure dominant. So, okay. Suppose here also the same thing. Suppose this portion is not given in your question and your ratio is told that is a 1:1. Then obviously what will happen here? You have to write the heterozygous top. So, okay, heterozygous, that character, that is the tall. What about the character that given, that is the.
Next is if this portion is not given and the result your ratio you will get the 0:4, then you will obviously you should that is answer will be that is a heterozygous recessive. So okay, so what is the which type of question? Number one question, what is test cross? Sorry, what is test cross and why do we why should we do the test cross? That is we should do the test cross for the improving the breed of the organism. Other or number two, that is we should know the genetic configuration of the unknown organism. Genetic configuration of the unknown organism. In that case, we should do this test cross. So okay. If there is a 4:0 ratio, then it will be the pure dominant organism. If it is 1:1, then it will be the heterozygous dominant. And if it is 0:4, then it will be the homozygous recessive. So, okay, this is about the monohybrid cross. Similar way, may if it is do so well, now we just start with the test cross, the dihybrid cross. So, okay, dihybrid cross, and that is the Mendel whatever taking the characters that we take here also. That is a dihybrid cross make whatever is a capital Y, capital Y, capital R, and another is the small y, smaller. Okay? So okay, so here also we take this that cross here. So if we cross this, so what we'll get here? Then capital Y, small y, capital R, smaller. That you know that is in F1 generation we get this type of hybrid organism. If we do the test cross here, then what will be the result? Capital Y, capital R, crossed with here also the homozygous recessive. So okay, capital Y, capital R, small r, crossed with homozygous recessive. Here's a small y, smaller, and the crossed with homozygous recessive. This portion that is a may be known or may be unknown. Suppose it is unknown, then from the ratio we should know that is what is the genetic configuration of that unknown organism. So okay, what do we get here? चेकरबोर्ड we can do. थोड़ा बड़ा चेकरबोर्ड होगा. Okay. From this what we get? Capital Y, capital R, capital Y, capital R. इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. इससे क्या होगा? Small y, smaller, small y, smaller, small y, smaller. Capital Y, capital R, capital Y, capital R. Whatever you do, that you will get capital Y, small y, capital R, smaller. All these things. So, okay. Ratio, all these are heterozygous dominant character. So, ratio will be 16:0. Why 16? Because in case of the dihybrid cross, that is the total number of, in the F2 generation, total number of organism is 16. So, there is a 16. No recessive character. So, 16:0. In case of this condition, what we'll get? Which gamete we get from here? Capital Y, capital R, capital Y, smaller, small y, capital R, small y, smaller. Right? Here, small y, smaller, small y, smaller, small y, smaller, and the small y, smaller. So, okay.
And what the get you will get here? Capital Y, small y, capital R, small r. 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 Capital Y, small y, or and then smaller, smaller. Capital Y, smaller, smaller. Capital Y, smaller, smaller. Capital Y, smaller, smaller. Small y, capital R, 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 smaller. Small y, smaller, smaller. Small y, smaller, smaller. Small y, smaller, smaller. And the small y, smaller, smaller. So, okay. This is heterozygous dominant chicken. That is how many uses are capital Y and the yellow and round. This is 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 yellow and round. So, okay. This is yellow and green. Yellow and round. This is yellow and round. Sorry. This is green and round, and then yellow and round one. Anything more? No. This is the 4. Yellow and round are 4. So, okay. Now this is yellow and wrinkled, yellow and wrinkled, yellow and wrinkled, yellow and wrinkled. 4. This is green and round, green and round, green and round, green and round. 4. And this is the green and wrinkled 4. तो क्या हम लोग देखें इसमें? ये 4:4:4:4. That means we can write 1:1:1:1:1. So, okay. So, if I get the answer this one, then easily we can say that if it is not given that this is the actual capital Y, small y, capital R, smaller, that means the heterozygous dominant. So, okay. Now, in this case, so this is very easy. So, all are recessive characters here. So, you can do this. From here, that is a small y, smaller, small y, smaller, small y, smaller, small y, smaller. Here also the small y, smaller, small y, smaller, small y, smaller, small y, smaller. And all these are, that is the 0:16. So, okay. So, in dihybrid cross, if we get this ratio, if this ratio is given, then your that unknown organism genetic makeup or genetic configuration will be pure dominant. So, okay. If this ratio is given and this is unknown to you, then this genetic configuration of this unknown organism will be, that is a heterozygous dominant. Clear? And if it is this given you and this is portion is not known to you, then it will be that is the homozygous recessive. So, okay. So, these are about the test cross. So, okay. So, if इसमें why do the test cross means whatever the characters that is the crossed with the pure recessive. Pure recessive, that is the test cross. And why should we do this test cross? First of all, to know the genetic configuration of the unknown organism, and number 2, to improve the breed of the organism, etc. And if it is in case of monohybrid cross, if in that case that is the 4:0,
In case of the heterozygous dominant, that is the 1:1, and in case of the recessive characters, that is the 0:4. In case of the hybrid, that is the 16:0, and that is in case of the heterozygous, that is the 1:1:1, and in case of the pure homozygous, that is the 0:16. Okay. Thank you.